A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12th accountancy. As you know very well, in the last three videos, we discussed first chapter of part A, that is a not-for-profit organization. In the last three videos, we already discussed a very important theoretical concept related to the not-for-profit organization as well as the numerical adjustment which helps to solve all the practical problems given in your book as exercise question as well as the additional questions. So now at the end of this chapter today I will take the one more numerical problem related to the not-for-profit organization from your side book. The question number 23, and this question is already shared by me in your WhatsApp group. The question number 23 is that from the following particulars relating to Ramakrishna Mission Charitable Hospital, prepare income and expenditure account for the year ending 31st March 2019 and the balance sheet as on that date. यानी आपके पास एक balance sheet बनानी है आपको और income and expenditure account बनाना है and you have a receipts and payment account of Ramakrishna Mission Charitable Hospital, as you can see that the question. And you can see that receipts and payment account for the year ended 31st March 2019 and the information are given. To cash in hand 7,130 on 1st April 2018. To subscription 47,996. To donation 14,500. To interest on investment at the rate of 7% full year 7,000. And proceed from charity show, that is 10,450. And for your payments, by PT expense 461, by medicine 30,519, by doctor honorarium 9,000, by salary 27,500, by equipment 15,000, by expense on charity show 750, by cash in hand 31st March 2019, that is 3,775. And the additional information are as follows, that is 1st April 2018 on 31st March 2019. Additional information number 1, subscription due, openings 250, closing 280, advance subscription opening 64, closing 100, stock of medicine opening 8,810 and closing 9,714, estimated value of equipment opening 21,200 and closing 31,600. Building cost less depreciation, that is 40,000 and 38,000. Okay, so this is a information which are related to the opening and closing balance of the different items like advanced subscription, outstanding subscription, medicines, equipment and building. You know very well, in this question firstly we have to prepare the income and expenditure account and thereafter we have to prepare the closing balance sheet. But the question is that जैसा पिछले वीडियोस में क्वेश्चन उठा था कि सर हाउ वी विल प्रिपेयर द क्लोजिंग बैलेंस शीट बिकॉज आई डू नॉट हैव अ ओपनिंग कैपिटल फंड, यानी कि बैलेंस शीट ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने से पहले हमारे पास कितना कैपिटल है, वी डू नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट दैट. So before the preparation of the income and expenditure account, let's we firstly prepare the firstly opening balance sheet to determine the opening capital fund of the for the year 31st March 2018. यानी 31st March 2018 की कैपिटल निकालने के लिए firstly we have to prepare the capital. We have to calculate the capital fund, and capital fund कहाँ से calculate होगा? Capital fund calculate होगा with the help of the opening balance sheet. So you know very well, there are basically few items which are also given in the question as the opening balance as well as the closing balance. So with the help of the opening balance we have to prepare the opening balance sheet. So firstly we have to prepare the opening balance sheet which are prepared on 1st April 2018. It is also prepared on 31st March 2018. What is the format? You know very well the format of opening balance sheet, same as it is in the previous question, that is the liabilities amount and assets amount. And the information are as follows. The first information is cash in hand. As you can see that the debit side of the receipts and payment account, receipts and payment account mein already cash in hand is given. So cash in hand is the assets and the value of cash in hand is 7,150. Next information is
Outstanding subscription, as you can see that the adjustment, additional information, outstanding subscription is a 240. Advance subscription is a liability. So advance subscription is 64, and stock of medicine, that is a opening stock of medicine. Stock of medicine is a opening balance, that is 8,810, and equipment 21,000, equipments, that is 21,200, and the building cost plus less depreciation. So you can see that the building value is 40,000 at the beginning of the year. सर इतना ही है? नो, इससे भी कुछ और इंफॉर्मेशन मिलेगी with the help of receipts and payment account. So you can see that the receipts and payment account, that is to interest on investment 7,000, ब्रैकेट में लिखा है at the rate of 7% full year. आपको इंटरेस्ट मिला इन्वेस्टमेंट पे पूरे साल का, कितने परसेंट रेट पे? 7% के साथ. सो इसका मतलब आपके पास पहले से इन्वेस्टमेंट होगा ना, यानी अगर आपके पास शुरू में इन्वेस्टमेंट होगा तभी तो आप ड्यूरिंग द ईयर उस पे इंटरेस्ट इनकम अर्न करोगे. मिला 7,000, आपको क्या मिला? यस, इंटरेस्ट कितने परसेंट रेट से? 7% के रेट से. सो योर द इन्वेस्टमेंट वैल्यू इज 1,000 मल्टीप्लाइड बाई 100, that is 7 lakh. So your investment value is 7 lakh. That's why you will earn the 7%. You will earn the interest. Sorry, that is a 7%. So 7,000 interest. So your value is 1 lakh. So 1 lakh का investment होगा. 1 lakh का 7%, that is a 7,000. Okay. Okay. So your investment value कैसे कैलकुलेट हुई? The 7,000 is the interest received from the investment from the 7% rate of interest. So that's why 7,000 will be divided by 7 multiplied by 100. So the opening investment value is 1 lakh. So this is a opening information, as you can see that with the help of the given information. So now we have to calculate the capital fund at the beginning. This is a balancing figure. You have to calculate the capital fund with the help of the balancing figure. So जब आप इसको add करोगे in the asset side, so you will find the 1,77,380, and the liability side is also 1,77,380, and now the capital fund is 1,77,316 as a opening capital fund. Okay, I hope it is clear for you how we will prepare the opening balance sheet, and with the help of the opening balance sheet we calculate the capital fund. Because without calculating the capital fund, we cannot prepare the closing balance sheet of the NPO. Now, after the preparation of opening capital fund, we have to prepare the income and expenditure account with the help of the given information, that is income and expenditure account. And the debit side will be known as the payments amount, income and rupees, that is income and expenditure account. If we write down the full name, that is income and expenditure account of जिसका भी नाम हो, of Mr. of Ramakrishna Mission Charitable Hospital. Okay, so this is account. So now you know very well, in the last video मैंने खुद ये चीजें शेयर की है कि the payment side of the receipts and payment account will be taken as a debit side of the income and expenditure account, and the receipt side of the receipts and payment account will be taken as the income of the income and expenditure account. So इसमें basically debit side भी है और credit side भी है. So हम सबसे पहले payment side को study करते हैं. The payment side of this question is firstly is PT expense. So as you can see the PT expense, और उसके साथ साथ adjustment को भी ध्यान रखते चलेंगे हम लोग. तो first expense is a PT expense और उसके साथ कोई भी adjustment नहीं है, that is a 461. The second one is a medicine, but sir medicine के साथ क्या है? Adjustment है. You know very well medicine is just like a consumable stores, and जब भी हम consumable stores की बात करते हैं तो we have to calculate the
opening materials, opening medicine plus purchase medicine minus closing medicine, and we find a medicine consumed. So the medicine value is 30,590. In this value we have to add opening stock of medicine and deduct the closing stock of the medicine. The opening stock of the medicine is 8,810 and closing stock of the medicine is the 9,740. 9,740. So the value is a consumable medicine is 29,660. Okay. The third information is doctor honorarium. Yes, it is a revenue expenditure. Doctors honorarium. The value of doctor's honorarium is 9,000. The next expense is salaries. Is there any kind of information related to the salaries? The information related to salary is not, so that's why it will be noted down as the given information, that is 29, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है सैलरी के साथ. सैलरी के बाद दिया इक्विपमेंट. यू नो वेरी वेल, इक्विपमेंट के साथ आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बिकॉज ओपनिंग इक्विपमेंट इज 21. अगर हम इक्विपमेंट की बात करें, यहाँ वर्किंग नोट की बात करें, दैट इज इक्विपमेंट से रिलेटेड. Okay, so the opening equipment is given in the balance sheet is 21,200. Okay, and we purchased the equipment during the year, that is 15,000. During the year हमने purchase कितना किया, 15,000 का. So end में हमारे पास equipment कितना होना चाहिए, 36,200. But when we see the information, the equipment of closing balance is 31,200. Closing balance कितना given है, 31,200, 31,600 सॉरी. सो आपका इक्विपमेंट दिख रहा है 36,200 का, बट क्लोजिंग इक्विपमेंट इज गिवन इन द क्वेश्चन इज 31,600. So the difference is 4,600 will be treated as the depreciation on equipment. So the next information is depreciation on equipment, that is 4,600. As well as if we take the information, that is the expense on charity show. Expense on charity show is considered when it is there is any kind of the proceed from charity show. Yes sir. If you are talking about the expense on charity show, so it will be shown in the payment side, expense on charity show, because ये इसमें इसलिए शो हो रहा है क्योंकि आपने किसी भी तरह का कोई चैरिटी फंड क्रिएट नहीं किया है बेसिकली. तो जब आपने चैरिटी शो क्रिएट ही नहीं किया है तो उसके एक्सपेंस को हम सेपरेटली डील करेंगे. सेपरेटली डील करने का मतलब यहाँ पर ये है कि चैरिटी शो पे खर्चा कितना हुआ आपका, दैट इज 750 रुपीज. द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन चैरिटी शो इज 750. एज वेल एज अगर हम देखें बिल्डिंग की वर्किंग नोट नंबर 2, this is the working note number 1 regarding the equipment, and number 2 is related to the building. So I want to space, इसको आप नोट कर लेना बैक करके वीडियोस को. सो अगर हम वीडियो नंबर 2 देखें विच आर रिलेटेड टू द बिल्डिंग, सो वी कैन फाइंड दैट कि बिल्डिंग की ओपनिंग वैल्यू कितनी है. ओपनिंग वैल्यू इज 40,000. इज देयर एनी काइंड ऑफ द परचेज ऑफ सेल ऑफ द बिल्डिंग. उसके लिए हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देखना पड़ेगा. तो रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड देखो, क्या हमने बिल्डिंग को खरीदा या बेचा है. नो सर, ना रिसिप्ट है ना पेमेंट है. रिसिप्ट होता तो हम सेल करते और पेमेंट करते हैं मतलब हम उसको परचेस करते, बट इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है. सो बिल्डिंग की क्लोजिंग वैल्यू से ही हम सीधे फाइंड आउट कर लेंगे व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन. सो बिल्डिंग का डेप्रीशिएशन कितना आ रहा है, 2000. ओके, सो दैट इज अ डेप्रीशिएशन ऑन building, that is 2000. because सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, कोई परचेज एंड सेल इज नॉट गिवन. I hope it is a clear. Debit side. Now we will move to the credit side of the income and expenditure account. तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या कंसीडर किया जाएगा. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में सबसे पहले कंसीडर किया जाएगा दैट इज अ सब्सक्रिप्शन. एंड सब्सक्रिप्शन के साथ थोड़ा सा लॉजिकली आपको डील करना पड़ेगा क्योंकि सब्सक्रिप्शन की टोटल वैल्यू इज गिवन दैट इज 47,000.
996 और कोई इंफॉर्मेशन गिवन है दैट इज ड्यू एंड एडवांस. यू नो वेरी वेल बिगनिंग का आउटस्टैंडिंग, यू नो वेरी वेल इसको हम लोग क्या करते हैं माइनस आउटस्टैंडिंग एंड का प्लस एडवांस बिगनिंग का प्लस एंड एडवांस एंड का माइनस. उसके बाद जो वैल्यू आती है इट विल बी शोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. सो लेट्स वी सी द एडजस्टमेंट. ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इज 240, closing outstanding is 280, advance beginning advance 64 and end advance is 100. so मैंने 47,996 में 240 माइनस किया, 280 प्लस किया, 64 प्लस किया, 100 माइनस किया, and we find that the closing subscription of the year which are credited in the income and expenditure account that is 48,000. जब आप इसको add less करोगे तो you will find that. The second information that is a donation. You know very well donation. The value is donation is 14,500. But there is a no information कि donation is a capital receipts or revenue receipts. आपको कोई information नहीं है. So you will take the specific reserve, either a general reserve, general donation. ये totally आप पे depend करता है. आप इसके लिए note भी लिख सकते हो on the in the end of the question. You will take the assumption the donation is a specific donation. बट यहाँ पर डोनेशन को हम एक तरह से स्पेसिफिक मान लेते हैं तो हम इसको उसमें कंसीडर नहीं करते हैं. ठीक है, बेसिकली आप इसको डोनेशन को कैपिटल रिसीप्ट मान लो. इस क्वेश्चन में क्या मैंने कहा कि इस क्वेश्चन में मैंने डोनेशन को स्पेसिफिक माना है, दैट्स व्हाई इट विल बी नॉट शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इट विल बी शोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट. सो हम क्या करेंगे, उसके बाद आपकी इनकम क्या है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट. ये तो रेवेन्यू इनकम होती है. रेवेन्यू इनकम इज अ 7,000 एंड लास्ट वन इज अ प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो. चैरिटी शो से आपके पास पैसा आया. प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो. तो चैरिटी शो से आपके पास कितना पैसा आया, दैट इज 10,450. एंड यू हैव अ टू ऑप्शन. अब मैं थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर देता हूं. यू हैव अ टू ऑप्शन, either you will show the expense on the debit side and receive from the credit side of the income and expenditure account. यानी दोनों का पर्पस सेम है, चैरिटी शो एंड द चैरिटी शो. आप चाहो तो दोनों को इस एज इट इज ऐसे ही दिखा दो, या फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास ये होता है कि जो 750 रुपीज है, 10,450 आपको मिला फ्रॉम द चैरिटी शो और आप इसको इसमें से क्या कर दो, डिडक्ट कर दो एक्सपेंस ऑन चैरिटी शो 750. तो इट इज टोटली डिपेंड ऑन यू, लेकिन फेयर प्रेजेंटेशन इज दैट, क्योंकि आपको मिला 10,450, उसमें से आपने एक्सपेंस कर दिया दैट इज 750, तो आपके पास नेट 9,700 नेट आपके पास पैसा बचा हुआ है. दिस इज अ नेट इनकम ऑफ एनपीओ. दैट्स व्हाई फेयर सिचुएशन तो यही है, फेयर वे यही है कि हम सेम आइटम्स की प्रोसीड्स को और उसके एक्सपेंस को एक साथ एडजस्ट करके दिखाएं. अगर मान लो ये ज्यादा होता, पेमेंट ज्यादा होता, एक्सपेंस कम, इनकम कम होती, तो इट विल बी शोन इन द डेबिट साइड. So that's why it will be shown as the proceed from charity show and minus expense on charity show, that is 750. मैंने डायरेक्टली यहीं से इसको क्या कर दिया, डिडक्ट करके दिखा दिया. So this is the ideal form. जैसा मैं बार बार बता रहा हूं कि आपको बेसिकली इसी तरह से करने की कोशिश करनी चाहिए. ओके, सो और कुछ बच गया मेरे अकॉर्डिंग तो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन अभी नहीं है जो यहाँ बच गई हो. सो अब हम उसके बाद क्या करेंगे, इसको टोटल करेंगे. टोटल करने के बाद मैंने टोटल किया हुआ है ऑलरेडी, और वी फाइंड दैट कि डेबिट साइड इज ग्रेटर देन द क्रेडिट साइड. यानी डेबिट साइड इज 73,221 बट क्रेडिट साइड इज लेस. आप देख लो ऐसे ही 48 एंड 7 55, 55 एंड 9 63, 63 7. तो यू कैन सी दैट ये वैल्यू कम है, सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफिसिट. एंड डिफिसिट कैसे आएगा, 73,221 minus this value, the value is 8,521. so I hope it is clear for you. और डिफिसिट को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर
ओवर इनकम, यानी आपका एक्सपेंस ज्यादा है, किससे ज्यादा है, इनकम से ज्यादा है, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज अ डिफिसिट. So deficit value of this question is that is 8,521. So I hope it is clear how we will prepare the opening balance. Thereafter we prepare the income and expenditure account, and with the help of the opening balance sheet, income and expenditure account, at the end of this question we have to prepare the closing balance sheet. हमें क्या बनाना पड़ेगा, closing balance sheet. But I know आपको भी चांस मिलना चाहिए, दैट्स व्हाई आई विल गिव यू द होम असाइनमेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द क्लोजिंग बैलेंस शीट ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड प्लीज सेंड योर रिप्लाई to the WhatsApp group, or either you will send the solution of this question to me personally. So with your name properly. Okay. So आपको करना क्या है, बेसिकली ओपनिंग बैलेंस शीट मैंने बना दिया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर मैंने बना दिया, क्वेश्चन मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दिया है. अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, यू विल शेयर द क्लोजिंग बैलेंस शीट, यू विल प्रिपेयर द क्लोजिंग बैलेंस शीट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड सेंड द सॉल्यूशन टू मी पर्सनली. ओके, आई होप इट इज क्लियर फॉर यू कि इस क्वेश्चन का कैसे हमने ओपनिंग बैलेंस शीट बनाया और कैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया, एंड वी फाइंड द डेफिसिट बैलेंस दैट इज 8,521, एंड योर इस क्वेश्चन का जो क्लोजिंग बैलेंस शीट है, इट इज अ होमवर्क फॉर यू. सो लेट्स वी मूव टू द next topic. So after discussing our first chapter, that is a not for profit organization, let's we move to the chapter number 2, that is accounting for partnership basic fundamentals. So some of the important theory, please note down in your copy. That is a chapter 2, accounting for partnership firm, that is fundamental. Okay, and this is the first chapter of accounting of partnership firm, because in the last chapter we discussed the various important accounting adjustment, accounting treatment of the not for profit organization. But in this video we have to talking about the accounting of partnership firm, that is a fundamental. So let's we discuss it, what are the important aspect regarding the accounting of partnership firm. In this chapter, first of all, we have a knowledge about what is partnership. So basically, what is partnership? Basically, partnership is governed by the Partnership Act 1932. That's why the definition of partnership is given by the Partnership Act 1932, and the definition of partnership is, the definition of partnership according to Partnership Act, according to Partnership Act 1932, section 4, partnership is the relation between, partnership is the relationship between two or more people, two or more people who have agreed to share, who have agreed to share of profit. What is partnership? Partnership Act, partnership is a relation between two or more people who have agreed to share profit of a business, of business carried on, carried on by all, carried on by all, or any of them,
एक्टिंग फॉर ऑल। बेसिकली ये मैं थ्योरी इसलिए आपको लिखवा रहा हूँ क्योंकि इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन फॉर एग्जामिनेशन पर्पस। बेसिकली अगर आप किसी चैप्टर को पढ़ते हैं और उस चैप्टर का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता होता है तो इट इज अ वेरी सेमफुल for any person, either it is a teacher or the student. So firstly, you have a better understanding what is partnership when we are talking about the accounting for partnership firm. So what is account partnership and what is partnership firm? ये दोनों समझना बहुत जरूरी है. So basically, firstly we have to knowledge about what is partnership. So basically जो पूरी partnership होती है वो एक इसके लिए specific act बनाया गया है, that is Indian Partnership Act. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. उसके एक सेक्शन 4 में पार्टनरशिप की डेफिनेशन गिवन है. व्हाट इज पार्टनरशिप? पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पीपल. यानी पार्टनरशिप रिलेशन है किसके बीच का? दो या दो से अधिक लोगों के बीच का. हु हैव एग्रीड टू शेयर ऑफ प्रॉफिट. जो एग्री हुए हैं प्रॉफिट को शेयर करने के लिए. क्लियर? किस प्रॉफिट को? ऑफ अ बिजनेस. बिजनेस की प्रॉफिट को कैरिड ऑन बाई ऑल. जो सारे लोग बिजनेस चलाएं, सारे मिलकर बिजनेस चलाएं, या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या उनमें से कोई एक चलाए, सबके लिए काम करे. दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द एक्टिंग पार्टनर एंड स्लीपिंग पार्टनर. सो व्हाट इज पार्टनरशिप? सो पार्टनरशिप इज अ रिलेशन. एक रिलेशन है बिटवीन टू और मोर पीपल. दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच का एक संबंध है, एक रिलेशन है. विच काइंड ऑफ रिलेशन? टू शेयर द प्रॉफिट. प्रॉफिट को बांटने का शेयर रिलेशन है कि प्रॉफिट को हम बांटेंगे. विच काइंड ऑफ द प्रॉफिट? बिजनेस के प्रॉफिट को, जो वो मिलकर बिजनेस चला रहे हैं. अब वो बिजनेस सब मिलकर चलाएं या उनमें से कोई एक चलाए, चाहे दो चलाएं, तीन चलाएं, इट इज नॉट क्लियर बिकॉज एक्टिव पार्टनर ही बेसिकली बिजनेस को रन करता है और स्लीपिंग पार्टनर बैक एरिया से सपोर्ट करता है. सो बेसिकली एक्टिव और स्लीपिंग पार्टनर का कॉन्सेप्ट होता है. दैट्स वाई ये हम नहीं कह सकते हैं कि हम तभी प्रॉफिट सब में बटेगी जब सारे पार्टनर काम करें. कुछ एक्सेप्शनल कंडीशन होते हैं जहां कोई एक स्पेसिफिक पार्टनर वर्क करता है और सारे लोग उस पैसे उस प्रॉफिट को एंजॉय करते हैं, क्योंकि देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिंग पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर. हाँ, सो वेरियस काइंड ऑफ द पार्टनर. दैट्स वाई we have to learn this definition of partnership, which is given by the Partnership Act 1932, Section 4. Partnership is the relation between two or more people who have agreed to share the profit of a business carried on by all or of them acting for all. Okay, so this is a basic definition of partnership. The next and very important thing related to the partnership, that is, what is the partner? What is a partner? The second definition. So partner is a person who have the person who have entered into the person who have entered into a partnership. यानी जो पर्सन पार्टनरशिप की रिलेशन को क्रिएट करते हैं. द पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विथ वन अनदर, एक दूसरे के लिए. द पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विथ वन अदर कॉल्ड पार्टनर. सो व्हाट इज पार्टनर? पार्टनर जो पर्सन होते हैं, जैसे हम आप मिलकर कोई फर्म बनाएं, कोई एक पार्टनरशिप क्रिएट करें, यानी एक रिलेशनशिप क्रिएट करें. हम लोग मिलकर रिलेशनशिप क्रिएट करें कि हम बिजनेस चलाएंगे और बिजनेस के प्रॉफिट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. सो वी आर नोन एज द पार्टनर. ओके, एंड व्हाट इज अ फर्म? फर्म्स मीन्स द कलेक्टिव फॉर्म ऑफ द पार्टनर. व्हाट इज फर्म? द collectively form of partners and partnership is called firm. Basically what is a firm? फर्म जो होती है ये पार्टनर और पार्टनरशिप की कलेक्टिवली फॉर्म होती है. यानी इसको हम इस तरह से समझाएं कि सपोज दिस इज अ हाउस और इस हाउस में तीन लोग रहते हैं और तीनों के बीच में ऐसा रिलेशन है, किस तरह का, कि वो सब बिजनेस करते हैं
और उनके बीच में जो बिजनेस हो रहा है और बिजनेस से जो प्रॉफिट हो रहा है वो सब आपस में शेयर करते हैं, चाहे वो बिजनेस कोई एक चला रहा हो या दो लोग चला रहे हैं या तीनों लोग चला रहे हैं बेसिकली। तो दिस इज कॉल्ड, ये जो इन लोग के बीच में रिलेशन है, दिस इज नोन एज द पार्टनरशिप, एंड दे आर इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर। सब एक दूसरे के लिए क्या कर रहे हैं, पार्टनरशिप रिलेशन क्रिएट किए हैं एक दूसरे के लिए, लिखा है ना, विथ वन अदर अनदर, यानी द पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप, जो पर्सन पार्टनरशिप रिलेशन में इंटर्ड करते हैं, दे विल बी नोन एज द पार्टनर। और इनका कलेक्टिवली फॉर्म, यानी जहां भी पार्टनर और पार्टनरशिप यानी पर्सन हो और पर्सन के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप हो, पार्टनरशिप जैसा रिलेशनशिप हो, सो इट विल बी नोन एज द फर्म। तो वो क्या कहलाती है, फर्म। और फर्म्स नेम क्या होता है, जिस नेम के अंदर लोग वर्क करते हैं बेसिकली। जैसे एक्स कंपनी के तीन पार्टनर हैं और तीनों पार्टनर के बीच में पार्टनरशिप का रिलेशनशिप है, तो दैट्स व्हाई इट विल बी नोन एज द पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म का कोई स्पेसिफिक नेम होता है, यू नो वेरी वेल। ओके, सो इन दिस वीडियो I hope you will discuss, we discuss a very important topic and very important questions of NPO. So I hope today we cleared all the topics very easily. आज के लिए इतना ही. Thank you. Thanks a lot and take care.